अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है जी मुस्लिम पर्सनल लॉ का एसेंशियल्स ऑफ मैरिज यानी कि निकाह। इंट्रोडक्शन। Marriage or nikah is a civil contract which is made by parties for the sole purpose and object of benefiting themselves. According to Shariat, it is a method to legalize the cohabitation of a man and a woman, and issue out of this union are legitimate under Islamic law. Contract of marriage need not to be proved through a written document. मतलब ये है कि निकाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ये दो मुतफरिक लोगों के दरमियान होता है, यानी कि औरत और मर्द के बिटवीन में, रूहानी पर्पस के लिए और उनकी ये समझ लें कि फैमिली के लिए। और इसका इस्लाम में ये नहीं है कि उसके लिए रिटर्न आपके पास डॉक्यूमेंट हो कोई निकाह का। शरीयत के हिसाब से ये मतलब कि दोनों का एक दूसरे पर ईमान होना चाहिए, अल्लाह पर ईमान होना चाहिए। उसके बाद है जी, देर आर थ्री एस्पेक्ट ऑफ मैरिज इन इस्लामिक लॉ विच आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एज अ होल. इट इज़ contract and not sacrament. It has three features. There can be no marriage without consent, मतलब मर्जी के बिना कोई शादी नहीं। उसके बाद है जी and in a contract provision is made for its breach. The various kinds of dissolution by acts of parties or by operation of law. Third है जी, terms of marriage contract which in legal limits capable of being altered to suit individual case in Islam are definite. High social status to women is given after marriage, and there are restriction on unlimited polygamy and allowed controlled polygamy. Relevant provision section 250 and 255 of the Muhammadan law. Cross reference section 5 of Muslim laws ordinance 1951. Meaning of marriage or nikah. Marriage means wedlock, the mutual relation of the husband and wife. It is a contract for the legalization of intercourse and procreation of children. इसके बाद है जी डेफिनेशन ऑफ मैरिज सेक्शन 250. मैरिज इज डिफाइंड टू बी अ contract which has for its object the procreation and legalizing of children. Aspect different of marriage in Islam. Social aspect. Islam bestows a great status to married women. यानी कि इस्लाम में शादीशुदा औरत को बहुत ज़्यादा तरजीह यानी कि इज़्ज़त दी जाती है. रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस ऑफ पोलोजेमी. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encouraged the status of marriage. Legal aspect. There is no concept of marriage without the consent of parties. Second, the term of the contract of marriage within the legal limit of individual. Religious aspect. Marriage is the basis of society. It is an institution which uplift the human being. The institution of marriage is regarded the central idea of branch of family law of every community. Object of marriage है जी, first legalization of sexual intercourse, procreation of children. उसके बाद है जी preservation of human race, regulation of social life. Nature of marriage है जी, Muhammadan marriage is purely contractual. It is considered a religious duty. It is an act of ibadat which is called sunnat muakkida. उसके बाद है जी essential of marriage section 252. उसमें है जी proposal. In order to make
valid marriage, there must be a proposal offer by one party. It is also called ijab. Acceptance. For the valid marriage, for the proposal offer so made should be accepted by our behalf of the other party. It is called kabul. If there is no acceptance, देर कैन बी नो वैलिड मैरिज। मतलब सबसे पहले ये है कि प्रपोजल लड़के वाले साहब से मतलब इलाके के या सूबे के हिसाब से तो ये है जी कि कहीं पर पहले लड़के वाले जाते हैं तो कहीं पर पहले लड़की वाले जाते हैं। अगर लड़की वाले जाते हैं तो वो ऑफ़र करते हैं, अगर लड़के वाले जाते हैं तो वो ऑफ़र करते हैं, और उस ऑफ़र के बाद उसको कबूल, वो ऑफ़र कबूल होती है तो तब भी वो शादी में मतलब वो मैरिज जो होती है वो वैलिड है। उसके बाद है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द सेम मीटिंग। मतलब ये है कि जो उसकी ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होती है वो एक जो सेम मीटिंग होती है ना उसमें ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदा जाए और वो कह दे जी कि ऑफ़र करवा दे और वो 10 साल के बाद उठ के खड़े हों जी कि हमने कबूल करना है, वो नहीं होना। फ्रीडम, द पार्टीज़ contracting marriage should be free person. Marriage with a slave girl is prohibited. Consideration, there must be some consideration in marriage, which is dower. The parties are bound to fix amount of dower at the time of marriage. A marriage without dower is void. मतलब ये है कि जब वो शादी फिक्स करे, जब वो मीटिंग हो रही है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हो गई है, और उसके बाद दोनों पार्टी को ये चाहिए कि वो जो भी डोवर यानी कि जहेज़ वगैरह वो फिक्स करना है वो उस वक्त ही कर दें, ताकि वो ना शादी का बाद में माहौल या वो ख़राब ना हो। मेजॉरिटी द पार्टीज contracting marriage should be major. The majority act does not apply on marriage, divorce, maintenance cases. Majority means age of puberty. ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन ऑफ अपोजिट सेक्स। देर इज नो कंसेप्ट ऑफ मैरिज ऑफ सेम सेक्स इन इस्लामिक पर्सनल लॉ। मतलब ये है जी कि आज के आपने सुना ही होगा कि एक वो लॉ पास हुआ है तो जेंडर का, कि वो सेम जेंडर वाले एक दूसरे के साथ शादी कर सकते हैं, लेकिन इस्लाम में ये है कि जी कि वो नहीं कर सकते, सेम नहीं कर सकते, अपोजिट कर सकते कि लड़का लड़की से और इस तरह से है। ऐसे नहीं है कि लड़का लड़के से कर सकता है या लड़की लड़की से कर सकती है, वो नहीं है। लेकिन अब वो एक उन्होंने करवाया था बिल पास। उसके बाद है जी विटनेस। इन केस ऑफ सुन्नी मैरिज इधर टू मेल और वन मेल एंड टू फीमेल विटनेस। मतलब ये है कि या तो दो मर्द होने चाहिए या एक मर्द होना चाहिए और दो औरतें होने चाहिए। शिया में है जी नो विटनेस, अगर उनके निकाह में कोई विटनेस नहीं है तो भी चलेगा। क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस अडल्ट होने चाहिए, सेन होने चाहिए। फ्री कंसेंट, मैरिज इज ओनली वैलिड अंडर फ्री कंसेंट। नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड बाय गार्डियन टू मैरी। उसके बाद है जी legal effect of a valid marriage. A valid marriage create between the parties prohibited degree of relation and reciprocal rights of inheritance. Lawful sexual intercourse. A valid marriage makes the sexual intercourse between the parties as lawful. यानी कि शादी के बाद उनके बिटवीन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो लॉफुल होता है। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन which are born out of the valid marriage are considered as legitimate children of the parents। यानी कि शादी के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी लॉफुल होते हैं, लीगल होते हैं। Entitlement to dower, after the valid marriage the wife becomes entitled to dower। ठीक है जी। Entitlement to maintenance, the effect of the valid marriage is that the wife becomes entitlement of maintenance। Entitlement to restrain wife, the husband can restrain the movement of his wife in reasonable manner। Observance of iddat, the wife has to go to under a period of iddat in case of death of her husband on the dissolution of divorce of marriage।
यानी कि वो जब कोई खुला लेती है या तलाक होती है तो तब भी वो उसने इद्दत करनी है, अगर उसका हस्बैंड मर जाते हैं तो तब भी। Prohibitions regarding marriage. The prohibition regarding marriage due to the rules of affinity comes into operation. Mutual rights of inheritance. By virtue of the valid marriage, mutual rights of inheritance are established. Women subject to her pre-marital school of law. The valid marriage has its effect that a woman does not change her status on marriage. She remains subject to her own premarital school of law. No interest in the property of each other. On legal effect of valid marriage is that neither husband nor wife acquire any interest in the property of the other by reason of marriage. नंबर ऑफ वाइफ्स सेक्शन 257 में आ जाता है जी। अ मुस्लिम हस्बैंड मे हैव एज मैनी एज 4 वाइफ्स एट द सेम टाइम बट नॉट मोर, मतलब एक ही वक्त में वो 4 बीवियां रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इफ़ ही मैरीज अ 5th वाइफ व्हेन ही हैज़ ऑलरेडी 4, सच मैरिज वुड बी इरेगुलर, मतलब कि पहले 4 उसके पास मौजूद हैं और उसके बाद भी उसने एक और कर ली, यानी कि 5वीं कर ली, तो वो इरेगुलर होगी। Conclusion. To conclude that marriage is not a sacrament but a civil contract between two persons of opposite sex, every Muslim of sound mind and has attained the age of puberty may enter into contract of marriage. The main essential of marriage are proposal, acceptance, witness, free consent and consideration, which is called dower. थैंक यू। आज का लेक्चर हुआ ख़त्म।